Okay. So now, what is chromatography? Basically, so chromatography is a separation technique. Okay, separation of the colors, chemicals, and the medicines. From where? From a mixture, just like a sieve to separate and stones, sands and stones. वैसे उसी को क्या बोलते हैं अपन? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं. Very simple terms. Chromatography, chromatogram. Okay, chromatogram may be called as a picture or the record you get at the end of the chromatography that shows how the mixture was separated, like a graph or the colorful spot. Now, retention time, these are the very brief definitions. Okay, you have to write the in-depth definitions. Okay, retention time. So, it may be called as a time the substance takes to come out of the chromatographic system. It is the time a substance takes to come out of the chromatographic system. Okay, so best example is how a long runner takes to finish a race. Dead time, the time it takes to something that doesn't stick at all to come out. ठीक ना? So dead time is T0, the time it takes for something that does not stick at all to come out. Like a example, like a kid sliding down a slide super fast without stopping anywhere. There, very, very brief definitions. Adjusted retention time, TR dash, okay, that is the retention time minus the dead time. Okay, retention time and the dead time का जो subtraction होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? Adjusted retention time. Okay, so like counting only the time the runner actually spends the running, not standing at the starting lane. Now capacity factor, so it shows how much a substance likes to stick in the column, okay, compared to leaving with the flow. Bigger flow, more sticking. Selectivity factor alpha, okay, that is a number. Selectivity factor is a number alpha, annotated by alpha. And what it tells how well the two substances are separated. That means higher is equivalent to better separation. Now resolution, RS, annotated as RS. Okay, so how clearly two substances are separated. Okay, that means like clearly, how clearly you can see the two mountains apart instead of them looking like a big hill. Are you getting it? That is called as a resolution. Good example. You happy with the examples? Yes. Good for understanding. Hello. 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 Are you getting? Hello. Are you getting? No one is responding. Please respond. Hello. Yes, sir. Okay, okay, okay. Thereafter, the stationary phase, the part that stays still in the chromatography. Example like a paper or the column where things stick. Okay, that is called as the stationary phase. Mobile phase, the part that moves. Example like the liquid or the gases that carry the substances through stationary phase. RF value, RF value is the retention factor, okay, in TLC paper chromatography. So what it indicates that how far a spot is moved compared to the column front, okay, how far a spot has moved compared to the solvent front. Example क्या है? Like comparing how far the two kids ran in a race. So very
comedy example, but good example. Now we will go through the detailed definitions. Now, chromatography. You have to write these definitions. Okay, don't write the silly examples. That is for your understanding only. So, from here, you have to write the chromatography. So, chromatography is basically a technique. Okay, technique for what? Technique for analyzing and separation. First, separation, thereafter, analyzing the mixture. Okay, separation and analyzing the mixture. How it is done? It is done by um, sample separation and analyzing of mixture of what? Substances. Okay, and how it is done? By distribution. Okay, so how you distribute it? You distribute into two phases, that is called as the stationary phase and the mobile phase. Okay, thereafter the simple explanation. Imagine you have colored inks mixed together. When you put them on the paper, okay, and dip it in water, the color spreads out and separate. And that's only the concept of chromatography. Very simple example. You can go through it. Example, separating black ink into blue, red and yellow on a filter paper. Thereafter, chromatogram. Okay, so chromatogram is called as the visual output. Okay, and what is visual output? What we see. So that visual output has to be recorded. Okay, so visual output or the record that is obtained. Okay, when after separation in the chromatography, and it appears as a series of spots, TLC paper, or as a peak on a graph, HPLC and GC. Simple explanation. So basically, it is a report card of the mixture showing that inside and how much outside. Example, the graph with the peaks in the HPLC or the colored spots on the TLC. Very, very important. Thereafter, RT, TR, these are the names of the retention time. Okay, so the definition is very simple. So it is a time. Okay, time of what? Time taken by the substance. Okay, time taken by the substance for what? For passing. From where to pass? From the injection point to the detector in the chromatography. That is called as the retention time. Simple explanation is like timing how long a runner takes. We have seen it. Example, in HPLC, caffeine might come out at 3.2 minutes, paracetamol at 5.1 minute. That time, T0. Okay, the time taken by the unretained compound, one that does not interact with the stationary phase, to travel through the column. Okay, are you getting what I am saying? Example, hello, hello, are you getting what I am saying? Hello, hello. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Example, the water flows straight through a column in 1 minute, and that's only the dead time, annotated as T0. Okay, thereafter, adjusted retention time TR dash. Definition, retention time of a compound minus the dead time. So TR dash is equivalent to TR minus T0. Simple example, you have the or you have actual running time on the track and not the waiting time of the start. Okay, example, if a truck peak comes at 6 minutes and T0. Okay, T0 is the dead time is 1. The adjusted retention time would be 5 minutes. 5 minutes. Now capacity factor. So capacity factor is known as the ratio. Ratio of what? Ratio of the time compound. Okay, that is spent in the stationary phase to the time it spends in the mobile phase. Okay, annotated as K dash. K dash is equivalent to TR, time of a compound spent
in the stationary phase, that is the Tr minus T0, okay, and divided by T0. So simple explanation, it tells how much a compound likes to stick inside the column. Okay, example, a K dash of 5 means compound spends 5 times longer time stuck inside the flowing freely. Selectivity factor, also annotated as alpha. Okay, so what it measures? It measures how well the two compounds are separated based upon their relative retention time. So alpha is equivalent to K2 dash divided by K2 1, K dash 1, where K2 should be always greater than K1. Okay, and K, both are the constants. Simple example, the how the fast two runners, bigger alpha is equivalent to bigger difference is equivalent to easy separation. So example is aspirin K dash 2, caffeine K dash 4. So alpha 4 by 2, caffeine divided by aspirin. So your selectivity factor would be 2. Now the resolution, very important definitions. Okay, resolution is an indicator of what? How well the two peaks are separated in a chromatogram. How well the two peaks are separated inside the chromatogram, annotated as RS. RS is equivalent to 2 multiplied by Tr2 minus Tr1 divided by W1 plus W2. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब ये डब्ल्यू क्या होता है बता देता हूं आपको मैं. हेलो, व्हाट इज डब्ल्यू? हेलो, Yes, sir. हाँ क्या होता है बेटा? W2 W1 क्या होता है? विड्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पीक विड्स. ओके, हेलो, हेलो, सुन रहे हैं? पीक विड्स होती है W1 एंड W2, विड्थ ऑफ ईच पीक. हेलो, समझा गया? हेलो, आर यू गेटिंग? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ sir. Yes, sir. हाँ, देयर आफ्टर simple explanation, like how clearly you can see the two mountains apart. If they overlap, resolution is poor. So RS is equal to 1 means the peak just touches. So RS should be greater than or equal to 1.5 means good separation. Now stationary phase. Okay, so definition, the phase in the chromatography that does not move and act as a surface for separation, that is called as a stationary phase. Okay, so example, paper in paper chromatography, silica in TLC, column packing in HPS, these are the stationary phases. Thereafter, mobile phase, okay, the phase that moves through or over the stationary phase, carrying the mixture with it. Okay, example, water or alcohol in paper chromatography, solvents like methanol in HPLC, gases like helium in GC. Now, retention factor RF in TLC paper chromatography, the ratio of the distance traveled by the solute means which makes the spot, okay, to the distance traveled by the solvent front. Okay, RF, distance traveled by the solute,
divided by the distance traveled by the solvent front. That is called as the retention factor, annotated as RF. Okay. Example, if the solvent from front traveled 10 centimeter, the spot moved 5 centimeter. So RF would be 0.5. So what would be the RF? RF would be 0.5. Please don't talk. Don't talk. So these are the basic definitions. Have you got it? Yes. Have you got it? Hello. Yes, sir. Yes, sir. These comes under the introduction to chromatography. Okay. Now the next part we will be going to see. Can you see it? Screen is visible to all of you? Yes. The screen is visible to all of you? Hello. Screen is visible? Hello. Yes, sir. Okay. So now column chromatography. Okay. What it includes? The chromatographic methods in which the stationary phase is packed in a column. The mobile phase is moving liquid or the gases. Okay. Now, based upon their mechanism of separation of the solutes, 5 major type of CCs are distinguished. Usually, one mechanism predominates but does not exclude the other. Okay. Now, different type of the chromatographies are there. Okay. We have seen adsorption, partition, ion exchange, molecular exclusion, affinity chromatography. Okay. So we have already seen. Now the column chromatography. Very, very important. Here the stationary phase is held in a narrow tube. Okay. Stationary phase is held in the narrow tube. This is the narrow tube. Okay. Which the mobile phase is posed under pressure or under the effect of gravity. So this happens in the column group. Very simple. Any doubt in this? You can ask. No, sir. Okay. Thereafter, solvent, the term we have seen. What is developer? So developer can be a liquid with the more affinity to the stationary phase than the solvent, but less than solutes, just capable to move them through the column. Okay, are you getting what I am saying? So developer is a liquid. Okay, what's its affinity? Its affinity is towards the stationary phase than the solvent. Okay, but less than the solutes, just capable to move them through the column. Okay, effluent. Okay, effluent is also a liquid. Okay, and what is effluent? Effluent, that is the liquid that passes through the column. Eluent is again a liquid. Okay, and its affinity is poor to the stationary phase than the solutes, but is capable to move out of the solution. So that is called as the eluent. Eluate. Eluate means fraction of eluent containing a required specific substance. Okay. VR, retention volume. Okay. Retention volume. What is the other name for retention volume? It is also called as the
retardation volume. Okay, and what is retardation volume basically? So it's a volume of what? Mobile phase. Okay, and that passes out of the column. Okay, now before illusion of the specific substance, that is called as the retention volume. Now open column chromatography. I hope you have got it, or you want me to repeat it? Hello, hello. You want me to repeat it? This part, or you have got it? Hello, unmute yourself. Hello, Yes, sir. Yes, sir. you want me to repeat it? No, sir. Okay. Now the open column chromatography. So basically, it is a traditional column chromatography. Okay. So how it is characterized? It is characterized by addition. Addition of what? Mobile phase. Okay. And addition of the mobile phase under what? Atmospheric pressure. And stationary phase is thereafter packed in the glass column. Okay. What happens in the open column chromatography? So it is a traditional chromatography, and how it is characterized? By addition. Addition of what? Mobile phase. Mobile phase at what? Under atmospheric pressure, and stationary phase is packed in a glass column. Following slides contain the stepwise procedure. Now, first, packing. Packing and operating the column. So selection of the methods of packing depends upon what? The density. Yes, definitely density. What are the techniques used? Wet, dry, and slurry methods. Okay. In all cases, avoid inclusion of air bubbles. Air bubbles should be avoided. Okay. Second thing, sample addition. So you have to add the sample evenly in a concentrated solution to the top of the column, which is protected from the disturbances. Okay. Add glass wool for avoiding disturbances, or the filter paper. Illusion. Thereafter, what happens? Illusion. Now, illusion techniques. So, two type of the illusions are there: isocratic illusion, gradient illusion. Okay. So, in isocratic illusion, what happens? Okay, you have to add solvent mixture and its composition is fixed. So you have to add the solvent mixture with a fixed composition under the whole process, during the complete process. During the complete process. So there are the two type of the illusion technique. First is the isocratic illusion. Second is the gradient illusion. Now in isocratic illusion, what you have to add? You have to do the addition of the solvent mixture of the fixed composition, okay, during the complete process. Okay. Now in gradient illusion is of two types: continuous or the linear illusion, and stepwise or the fractional illusion. So now continuous or the linear illusion. Okay. So what happens in the continuous or the linear illusion? So there is a continuous change in the composition of the mobile phase. There is a continuous change in the composition of the mobile phase over a specific period of time. Example, polarity, pH, or ionic strength. Stepwise or the fractional illusion. Okay, here the change is not continuous. Okay, that means if the change is not continuous, what it infers? What is the reason? So sudden change in the composition of the mobile phase is followed by a period of time where the mobile phase is held constant. Agree? Okay. आइसोक्रेटिक इल्यूशन में क्या होता है?
एडिशन करते हैं सॉल्वेंट मिक्सचर का फिक्स कंपोजिशन में थ्रू आउट द प्रोसेस। ग्रेडियंट इल्यूशन के दो टाइप्स होते हैं, कंटिन्यूअस और द लीनियर इल्यूशन, स्टेप वाइज और द फ्रैक्शनल इल्यूशन। कंटिन्यूअस इल्यूशन में क्या करते हैं, कंटिन्यूअस चेंज लाते हैं कंपोजिशन ऑफ द मोबाइल फेस पे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल क्या होता है उसका, पोलैरिटी, पीएच और आयन स्ट्रेंथ। स्टेप वाइज और द फ्रैक्शनल इल्यूशन में क्या करते हैं, चेंज लाते हैं और ये चेंज कंटिन्यूअस नहीं होता है, यानी अचानक चेंज आता है कंपोजिशन में, किसके, मोबाइल फेज के, फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर मोबाइल फेज इज हेल्ड कांस्टेंट। नाउ डिटेक्शन, on column detection for colored or the fluorescent compound directly after developing the chromatogram. Thereafter, monitoring of the eluted fractions, TC or the TLC, using special detectors connected to the column. What are the examples of the special detectors? RI detector, UV detector. RI detector and UV detector. Now the factor affecting the solutes, separation in the column chromatography. ओके, फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज किसका, सॉलिड स्टेशनरी फेज का या फिर सपोर्ट का। ओके, सो अगर आप साइज डिक्रीज करते हो तो सेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा। बट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल नीड हायर प्रेशर, बहुत ज्यादा स्मॉल पार्टिकल है तो उसको हायर प्रेशर पे निकालना पड़ेगा। कॉलम डायमेंशंस में क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी एक रेशियो में, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ इंक्रीज होंगी। उसके बाद में यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकिंग में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म जो भी पैकिंग रहेगी उसकी वजह से क्या होगा, इरेगुलर मूवमेंट होगा, किसका, सॉल्यूट्स का। कहाँ पे, कॉलम में। उसके बाद में क्या होगा, लेस यूनिफॉर्म जोन फॉर्मेशन होगा, बैंड ब्रॉडनिंग या टेलिंग दिखेगा। कॉलम टेम्परेचर, ठीक है ना, अगर आपने कॉलम टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ इल्यूशन भी क्या हो जाएंगी, अफेक्ट हो जाएंगी, और उसके वजह से कोई आपको सेपरेशन ढंग से मिलेगा नहीं, यानी टेलिंग हो जाएगा वहां पे। फिर उसके बाद में एलिमेंट जो सॉल्वेंट रहेंगे उसमें क्या होगा, तो सॉल्वेंट्स रहेंगी उनकी विस्कोसिटी कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए, एफिशिएंट रेजोल्यूशन के लिए। हाई वोलेटिलिटी रहेंगी तो रैपिड रिकवरी होंगी सब्सटेंस की। फिर इसके बाद में जो सॉल्वेंट फ्लो रेट्स है वो यूनिफॉर्म रहना चाहिए, लो फ्लो रेट्स रहना चाहिए ताकि बेटर रेजोल्यूशन मिले। फिर कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो में क्या आएगा, डिसकंटिन्यूअस फ्लो रहेगा तो रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो फिर से बताता हूँ, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्यूट्स में कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, पार्टिकल साइज रहेगा, किसका, सॉलिड स्टेशनरी फेस का या फिर सपोर्ट का। तो आपने अगर डिक्रीज किया साइज का तो सेपरेशन तो बढ़ेगा, पर अगर बहुत छोटे पार्टिकल है तो उसको हाई प्रेशर पे निकालना पड़ेगा। कॉलम डायमेंशन है, एफिशिएंसी इंक्रीज होंगी, कैसे रेशियो में, रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ इंक्रीज होंगी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैकेज में क्या करोगे, नॉन यूनिफॉर्म पैकिंग रिजल्ट्स टू इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट्स थ्रू द कॉलम। उसके बाद में लेस यूनिफॉर्म जोन फॉर्मेशन होगा, बैंड ब्रॉडनिंग होंगे इसका मतलब, या फिर टेलिंग होगी। कॉलम टेम्परेचर में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ इल्यूशन भी बढ़ जाएंगी और उसके वजह से सेपरेशन कम हो जाएगा, टेलिंग होगी। एलिमेंट सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को विस्कोसिटी कम रखो, ठीक है, उसके वजह से क्या होगा, एफिशिएंट रेजोल्यूशन मिलेगा। हाई वोलेटिलिटी रखो ताकि रैपिड रिकवरी ऑफ सब्सटेंस होगी। सॉल्वेंट फ्लो रेट कैसा रहना चाहिए, यूनिफॉर्म रहना चाहिए, लो फ्लो रेट रहना चाहिए ताकि रेजोल्यूशन अच्छे से मिले। कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो में क्या अगर हो गया, डिसकंटिन्यूअस फ्लो रहेगा तो डिस्टर्ब करेगा रेजोल्यूशन। उसके बाद में कंडीशन ऑफ एड्सॉर्बेंट में क्या करोगे, डीएक्टिवेशन करोगे एड्सॉर्बेंट को तो सेपरेशन भी अपने आप कम हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स में क्या करोगे, सब्सटेंस अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन का है तो मूव फास्ट होगा। अब देखो, यहां तक समझा आपको बेटा, हेलो, समझा आपको, हेलो बेटा, समझा। Yes. हाँ, अब ये एनईटीपी बोलते हैं इसको, नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट, ठीक है ना। तो ये एच यानी क्या होता है, थेरोटिकल प्लेट हाइट होती है, एल यानी क्या होता है, लेंथ होता है। सो एनईटीपी यानी क्या होती है, नंबर ऑफ थेरोटिकल प्लेट,
या फिर इसको कैपिटल एन करके दिया जाता है, इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है? लेंथ ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय एच। एच यानी क्या होता है? थेरोटिकल प्लेट हाइट। तो एचटीपी अगर इंक्रीज होंगी तो अगर इंक्रीज होंगी तो एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। तो एचटीपी डिक्रीज होंगी तो एफिशिएंसी क्या होंगी? इंक्रीज होंगी। ठीक है ना, कॉलम की। नाउ टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, तो पहला वाला क्या है? एडसॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इसमें एड्सॉर्बेंट कौन सा यूज करते हैं अपन? एल्यूमिना या फिर सिलिका जेल। इनका इंटरेक्शन होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ में। क्यों होता है भाई? क्योंकि इसमें ओएच ग्रुप प्रेजेंट रहता है सरफेस पे उनके। ठीक है ना, जितना पोलर रहेगा वो एड्सॉर्ब स्ट्रांगली होगा और इल्यूट भी स्लो होगा। ठीक है ना। उसके बाद में स्ट्रेंथ ऑफ एब्सॉर्प्शन ऑफ द पोलर ग्रुप ऑन द सपोर्ट, ये एक ऑर्डर फॉलो करते हैं, ये आपके सामने है। सी डबल बॉन्ड सी, उससे कम OCH3, फिर COR, फिर C डबल बॉन्ड O, CHO, NH2OH, COOH। उसी को अपन क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स, इथर्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स, अल्डिहाइड्स, अमाइंस, फिनॉल्स एंड एसिड्स। नो एप्लीकेशन इन सेपरेशन ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, तो एल्यूमिना है, तो स्टेरॉल्स है, डायस्टफ्स है, विटामिन है, एस्टर्स है, अल्केलॉइड्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है ना, ये सब यूज नहीं किए जाते हैं फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग फिनोलिक और द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है ना। उसके बाद में सिलिका जेल है, तो कौन सा है? स्टेरॉल्स रहेंगे या फिर अमीनो एसिड्स रहेंगे। फिर इसके बाद में कार्बन है तो पेप्टाइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, अमीनो एसिड्स है। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैरोटेनॉइड्स है, सैंथोफिल्स है। एग्री? ये सब एप्लीकेशंस है। आई होप दिस इज ओके विथ ऑल ऑफ यू। देखो, फिर से बताता हूँ। एड्सॉर्बेंट कौन सा यूज करते हैं? एल्यूमिना सिलिका जेल। ठीक है ना, इसमें इंटरेक्शन सॉलिड मॉलिक्यूल के साथ में होता है। ठीक है ना, वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है सरफेस पे, और जितना पोलर रहेगा वो एड्सॉर्ब होगा स्ट्रांगली और इल्यूट स्लो होगा। ठीक है ना। स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, पोलर कंपाउंड्स जिसको अपन सॉल्यूट बोलते हैं, वो एक ऑर्डर फॉलो करते हैं। ऑर्डर कौन सा है? ओलिफिन्स, इथर्स, एस्टर्स, लैक्टोन्स, अल्डिहाइड्स, अमाइंस, फिनॉल्स एंड एसिड्स। और ये एप्लीकेशंस है नेचुरल प्रोडक्ट में। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? हेलो, बी रिस्पॉन्सिव। इज इट ओके विथ ऑल ऑफ यू? हेलो, आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलिए। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट वाला पार्टीशन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है ना, इसमें क्या होता है? पैकिंग में क्या होता है? थेरोटिकल प्लेट होती है, इनर्ट सपोर्ट मटेरियल का रहता है, और उसको कोट करते हैं एक फिल्म के साथ में। और वो कोट करते हैं फिल्म के साथ में, और वो फिल्म कौन सी होती है? लिक्विड स्टेशनरी बेस की होती है। पैकिंग में क्या होता है? थेरोटिकली इनर्ट सपोर्ट मटेरियल को कोट करते हैं फिल्म के साथ में। फिल्म किसकी होती है? लिक्विड स्टेशनरी फेस की होती है। ठीक है ना। ये जो डिवीजन होता है, ये किसके थ्रू होता है? एब्सॉर्प्शन और पार्टीशन के थ्रू होगा। ठीक है ना। और सिग्निफिकेंस होता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे, इफेक्ट्स ऑफ द सपोर्ट कैन बी फेल्ट। ठीक है ना। ना सिलेक्शन ऑफ द सॉलिड सपोर्ट। सॉलिड सपोर्ट में क्या होगा? एब्जॉर्ब करोगे, रिटेन करोगे मोबाइल फेस को, एक्सपोज करोगे लार्ज सरफेस को, एज पॉसिबल टू द मोबाइल फेस, मैकेनिकल स्टेबल होना चाहिए, बी इजी टू पैक होना चाहिए, और रिटार्ड नहीं होना चाहिए सॉलिड फ्लो पे। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सपोर्ट में से वही अपना सिलिका जेल रहेगा, डायटोमेशियस अर्थ मेटल्स होंगे, किसेल गुआर, सेलाइट्स है, और सेलुलोज है। MCQ में पूछा जा सकता है। एग्री? ओके। मिराज, मिराज रजा, अनम्यूट करके बोलो बेटा। हेलो, कोई तो बोलो। Yes, sir. हाँ, कुणाल, ओके। नाउ सिलेक्शन ऑफ द मोबाइल फेस।
ठीक है ना, इसमें वही लिक्विड स्टेशनरी फेज होती है, उसका कंसिडरेबल डिफरेंस होगा सॉल्वेंट स्ट्रेंथ में। प्योर वाटर रहेगा, मिथेनॉल रहेगा उसके बाद में, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एसीटोन रहेगा, इथाइल एसीटेट रहेगा, ईथर रहेगा, क्लोरोफॉर्म रहेगा, डाइक्लोरोमीथेन रहेगा, बेंजीन रहेगा, टोलुइन रहेगा, CCl4 रहेगा, लो साइक्लोहेक्सेन्स रहेंगे, हेक्सेन्स रहेंगे और पेंटेन्स रहेंगे। एग्जाम्पल, अगर स्टेशनरी फेज वाटर है तो पेंटेन एक इलुएंट का काम कर सकता है। मोबाइल फेज यूजुअली सैचुरेटेड रहेंगी, किससे? स्टेशनरी फेज से। ठीक है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि हमको स्ट्रिपिंग को रोकना है। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है? वॉशिंग। वॉशिंग किसकी? स्टेशनरी फेज की। कहाँ से? कॉलम से। कौन करता है? मोबाइल फेज करता है। स्ट्रिपिंग यानी क्या? वॉशिंग ऑफ स्टेशनरी फेज। कहाँ से? कॉलम से। कौन करता है? मोबाइल फेज करता है। अब जेल परमिएशन अपन ने पढ़े हैं, ठीक है? हेलो, जेल परमिएशन पढ़े हैं अपन ने, ध्यान में आ रहा है? अरे ओके। एफिनिटी, आयन एक्सचेंज। हेलो, सुन रहे हैं Yes, क्या? sir. ओके ओके ओके।